Well, in a big decision, the Modi government has approved the unified pension scheme in place of the old and the new pension schemes. This will benefit around 23 lakh central government employees and will provide them with assured pension post-retirement. As per the government's announcement, the scheme will be effective from the 1st of April 2025. So this move comes amid the significant backlash from the government employees to the new pension scheme, which the opposition used to target the government with. Under this scheme now, if a government employee has worked for a minimum of 25 years, then he or she will receive 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months before the superannuation. Now, the amount would proportionally go down for a lesser service period, and if the employee leaves work after completing 10 years of service, then he will get a pension of 10,000 rupees per month. Now, upon the retiree's death, the family of the employee will get 60% of the last pension amount received by the retiree. एक मिनिमम अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है, दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है, तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। Well, Prime Minister Modi hailed the government's decision and said that the move ensures dignity and financial security of the government employees who contribute significantly to the nation's progress. The BJP and its allies in the NDA also hailed the move, calling it a gift for the central government employees. The opposition, though, linked the move to the polls in the four states and accused the Modi government of violation of the Model Code of Conduct. जो इसके लीडर हैं ओपीएस के, उन्होंने कहा कि ये मूर्ख बनाने वाली बात है, इससे अच्छा तो एनपीएस ही है। तो जो यूपीएस है एक धोखा है, ऐसा उन लोगों का कहना है। हमारी मांग ओपीएस की थी, ओल्ड पेंशन सिस्टम, वो ये मूर्ख बनाने के लिए ये सरकार जानी जाती है, वो आज मूर्ख बनाया है। और जिन लोगों को वार्तालाप के लिए प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, जो कर्मचारी नेता हैं, उनकी भी क्रेडिबिलिटी के बारे में सबको पता है कि वो सरकार से मिले जुले हैं, तो सौदा करेंगे कर्मचारी अधिकारियों का। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर ये तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, तो लानी पड़ेगी। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से देखिए कि 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 के अनाउंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। झारखंड और महाराष्ट्र कभी भी अनाउंस होंगे। तो एक पीछे के दरवाजे से इन्होंने आचार संहिता भी भंग कर दी, लेकिन आपकी चालाकियों से आप बाज नहीं आते हैं। My colleague Tejri is joining us on the broadcast with the details of how this will play out politically. Tejri, the opposition says this is only because the assembly elections are approaching. The centre says that this has been a demand for a long time, and the the government employees have been the backbone of the economy. They've been very crucial for the economy, and that's the reason they are being rewarded.
Well, absolutely. Now, politics has begun just after Ashwini Vaishnav announced that the new scheme will be benefiting 20 lakh central government employees, and in fact, a new scheme will be implemented from April 1, 2025. But we'll also have to see that, there will also protests going on to implement this pension scheme. But now, since it has implemented, now the politics has begun over it, where opposition is calling it the violation of model code of conduct. And on the other hand, the leaders of the BJP are certainly hailing this decision and calling it a gift for the government employees. However, the opposition is saying that now, since there are elections in the state of Haryana, Maharashtra, and in maybe in the upcoming year in the national capital as well, so and Jammu Kashmir as well. So that's why government is implementing the scheme just to gain. Just to increase their political vote bank. But yes, we'll have to see that how the government responds to the politics that is ongoing. But certainly this scheme, the pensioners will be receiving the 50% of their last withdrawn basic salary. This is what the Union Minister Ashwini Vaishnav has in fact told yesterday. And in fact also remember that, there were protests going on particularly in the non-BJP led states regarding this particular new pension scheme. And then now finally this new pension scheme has been approved, and in this particular scheme, government has ensured that employees will be receiving amount equivalent to 50% of their salary, which is certainly a big gift for them. Okay, all right. Thank you for joining us with those details, Setri. This is an introduction that is going to help many government employees across the country. Well, in a big decision, the Modi government has approved the unified pension scheme in place of the old and the new pension schemes. This will benefit around 23 lakh central government employees and will provide them with assured pension post-retirement. As per the government's announcement, the scheme will be effective from the 1st of April 2025. So this move comes amid the significant backlash from the government employees to the new pension scheme, which the opposition used to target the government with. Under this scheme now, if a government employee has worked for a minimum of 25 years, then he or she will receive 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months before the superannuation. Now, the amount would proportionally go down for a lesser service period, and if the employee leaves work after completing 10 years of service, then he will get a pension of 10,000 rupees per month. Now, upon the retiree's death, the family of the employee will get 60% of the last pension amount received by the retiree. एक मिनिमम अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीस पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है, दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है, तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा।